welcome back to the channel. Congratulations, we have done with 50 plus subscribers. Thank you so much for making this channel so successful, because I have started with the thought that if 1, 2 or 3 people will also learn from this, I'll be very grateful. But coming to 50 people is a milestone for myself. I know it's very less, but for me it's a milestone. So thank you so much for all the love and support. Keep loving, keep supporting like this. Now, we have finished with almost all the infections of oral cavity, like viral, bacterial, granulomatous, non-granulomatous. We have finished all the infection of oral cavity or oral and maxillofacial region. Okay. So I'll be discussing some of the terms which we are using daily in our practices, and we came across with different terms. So I'll be dealing that terms in like brief and explaining you कब कौन सा term use होता है और वो किस लिए use होता है mainly. Okay, let's start today's class. Okay, first term is hyperplasia. It may produce tissue masses referred to as tumor. However, they represent limited cellular proliferation. So, it may produce tissue masses referred to as tumors. तो ये ट्यूमर्स जैसे टिश्यू मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दे आर मेनली अ लिमिटेड सेलुलर प्रोलिफरेशन. हाइपरप्लेसिया इज अ सेलुलर प्रोलिफरेशन. सेल का बढ़ना इज हाइपरप्लेसिया. नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग इज हाइपरप्लेसिया. ओके, and size of cell is increasing is hypertrophy. So the hyperplasia is the limited cellular proliferation. They cease growth at some point. ट्यूमर जैसे नहीं होते कि लगातार बढ़ते रहते हैं. They cease growth like hamartomas. They cease growth at some point. And unlike true neoplasm, they lack the capacity of autonomous growth. तो इनका कोई ऑटोनोमस ग्रोथ नहीं होता. जैसे नियोप्लाज्म में ऑटोनोमस ग्रोथ होता है, मतलब अपने आप ग्रोथ होता है. दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ हाइपरप्लेशिया. तो इनके लिए एक स्टिमुलस चाहिए होता है, एंड आफ्टर cessation of that stimulus the growth also stops. So the evolution of these lesions is usually initiated and controlled by an identifiable stimulus. That was I was talking about that. However, the process stops when the stimulus is removed. तो जैसे स्टिमुलस हटा वो प्रोसेस हट गया, एंड द एवोल्यूशन ऑफ दीज लीजन इज यूजुअली इनिशिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय एन आइडेंटिफिएबल स्टिमुलस. तो स्टिमुलस है तो ग्रोथ होगा, और स्टिमुलस हटा तो ग्रोथ सीज हो गया. ओके, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेसिया इज फाइब्रोमा एंड पेरिफेरल जाइंट सेल proliferation. Now coming to hamartomas, it represents a dysmorphic proliferation of tissue that is native to the area. तो जो टिश्यू उसके नेटिव है तो वहीं का, नॉट अदर साइट और अदर टिश्यू, द नेटिव टू द टिश्यू जो डिस्मॉर्फिक proliferation होगा दैट इज hamartomas, एंड डज नॉट हैव द कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ. इनमें भी कंटिन्यूस ग्रोथ का कैपेसिटी नहीं होता, इनका भी ग्रोथ सीज कर जाता है आफ्टर सम टाइम. Okay, the distinction between a hamartoma and a benign neoplasm is often arbitrary. In fact, most benign tumors of infancy and childhood are actually developmental hamartomas. So mainly benign tumors and hamartomas are used independently, मतलब कर सकते हैं इनको एक दूसरे के लिए यूज़. Example, hemangiomas and pigmented nevi, odontomas and ameloblastic fibroodontoma. So these are examples of hamartomas. Okay, the salient feature of hamartoma are that they cease growing at some point, same as hyperplasia. They also cease growing at some point in their course, and they do not infiltrate into surrounding tissues. So जैसे नियोप्लाज्म इन्फिल्ट्रेट करते हैं सराउंडिंग टिश्यू में, हामार्टोमास नहीं करते. सो दे आर ट्रीटेड बाय इन्यूक्लिएशन. तो जहाँ पे बोनी इन्वॉल्वमेंट है, इन्यूक्लिएशन से ट्रीट कर सकते हैं, या तो लोकल पेरिफेरल एक्सीजन. और सॉफ्ट टिश्यू है तो वी विल डूइंग लोकल पेरिकैप्सुलर एक्सीजन.
So that's all about two terms. We'll be dealing other terms in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.